Hi, good afternoon, everyone. Good morning. Um, let's start with the live trading for today. Today is 5th of July and it is 11:16 right now. Okay, and if you look at the market, is quite flat. Nifty is actually almost flat, and Bank Nifty is little weaker. Okay. So overall, if you see, both Nifty and Bank Nifty are weak. And let's look at the calculator. See, if you look at the calculator is saying this. If you look at the calculator, above this was the buy and it couldn't do this. And below this, it has done this. And as long as it can sustain this, it has possibility to come towards this. And maybe this it can break also. These are actually what we have done yesterday also. If you see, आप देखोगे तो कल जो लेवल पर निफ्टी ने शुरुआत किया है वहीं पर आज भी शुरुआत किया है एंड कल भी रिजेक्शन हुआ था हायर लेवल में, आज भी हुआ है. ओके, एंड लेट अस लुक एट बैंक निफ्टी रिलेटिवली ओपनिंग भी थोड़ा वीक था, 45,170. इफ यू लुक एट बैंक निफ्टी, यहाँ नीचे एक टारगेट किया है बट उसके बाद ऊपर गया है एंड यहाँ पर ये सारा टारगेट कर दिया, यहाँ पर रिजेक्ट हुआ, 3 टारगेट किया है. देखिए ये तीसरा टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सस्टेन करना है. इट नीड्स टू सस्टेन दिस, इट हैज नॉट डन दैट एंड नाउ it has to again go down and sustain this below the low, then it will get some momentum. So we have a time now in weeks at around 11:15 to 11:30. Let us see what it will do. The next time will come only at 1 o'clock. So if market sideways रहेगा तो जो भी बड़ा मूवमेंट आएगा आफ्टरनून ही आएगा, आफ्टर 1:30. तो ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है. And if you see here, Bank Nifty has done this cup and holder kind of a pattern. So now if it breaks this and starts going down, we have at least some 300-400 points downside in Bank Nifty. And if you look at Nifty also, almost similar pattern है. तो यहाँ पर एक्चुअली इतना बड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट अराउंड 80 पॉइंट्स के आसपास है. तो बैंक निफ्टी कैन गो टुवर्ड्स 19,250 के आसपास जा सकता है. ठीक है, मेन चीज क्या है, 300 has to break. After 300 breaking, we have this is the next important support. तो मेरे हिसाब से ये 300 का जो लेवल है, ये ब्रेक इतना आसानी से नहीं होगा. जब भी होगा, we have potential to come further down. तो all depends on now on the बैंक निफ्टी का ही असर है. बैंक निफ्टी 400 पॉइंट चाहता है तो निफ्टी भी 100-150 पॉइंट्स जा सकता है. So that is what actually we have the possibility right now. बैंक निफ्टी में यहाँ पर जो गैप है इसको फिल करने के लिए आ सकता है, तो वो इम्पोर्टेंट लेवल होगा. एंड इफ यू सी द एडवांस डिक्लाइंस अभी भी क्वाइट हेल्दी है. Advanced declines are quite healthy. Okay, it is slightly becoming weaker. यहाँ पर if you see ICICI Bank is up, rest not many heavyweight.
In the pre-opening, Infosys, Reliance and all were up. अभी वो कुछ खास नहीं कर रहे हैं. And if you look at this HDFC Twins, which has almost 14% weightage in case now from the point of view of index, and that is down. So it is not going to be easy for the market to come up. And यहाँ पर advanced declines अभी healthy तो है. As of now, there is no big problem, and that is the reason why market is not going down. इतना आसानी से नहीं जा रहा है नीचे. If you see here, so 19,300 पर highest open interest है, and this they will try their best to protect. तो ये जो भी अगर टूटेगा तो only after 1:45 2 o'clock के बाद ही टूटेगा. बाई चांस अगर टूटता है, वरना 19,300 पर सपोर्ट मिलेगा. So if you see here 19,400 पर बड़ा सा वॉल्यूम है एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी वहीं पर है. तो this is acting as a very strong resistance which is taking the prices down. ये 350 के आसपास क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, इट इज स्टिल स्ट्रगलिंग देयर, तो उसके नीचे जाना पड़ेगा. एंड बैंक निफ्टी का देख लेते हैं. बैंक निफ्टी रिलेटिवली थोड़ा सा वीक दिख रहा है. एंड हियर इफ यू सी हाईएस्ट वॉल्यूम जो है इट इज एट 45,200. तो अभी जो लेवल दिख रहा है 45,400 के आसपास, एनीवे वी हैव गॉन वंस. तो बिलो 45,200 ही नीचे जाएगा. तो अभी there is a good amount of put writers who are not allowing it to go down. So 45,200 is where both put writers and call writers are trying to hold on. So now it is going below 45,200. So as long it is below 45,200, it is negative only. Bank Nifty Nifty is also negative. Nifty actually 19,400 से नीचे नेगेटिव ही है. यहाँ पर 19,350 पर एक्चुअली पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, उनको हटना पड़ेगा. सो लेट्स सी. विक्स इज एक्चुअली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. आप देखो विक्स हैज मूव्ड अप क्वाइट अ लॉट टुडे आल्सो. एंड अभी ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या हो गया है, ऑलमोस्ट हम 60 आरएसए के आसपास आ गए हैं ऑन द डेली टाइम फ्रेम. तो यहाँ पर इसके ऊपर निकल जाता है तो बहुत अच्छा सा मूवमेंट नेगेटिव साइड दे सकता है, बट शायद आज नहीं करेगा, कल कर सकता है. सो लेट्स सी. एज ऑफ नाउ, as per our calculator, see best is to use option calculator directly, not this option calculator directly you can use, because that is giving you a clearer thing. We have done a lot of testing now, and whenever you are trading on index में जब भी ट्रेड करते हो, ये आप एग्जिट के लिए चाहिए तो you can use Heikin-Ashi and you can use our index calculator, but preferably for all other things it is best to use our option calculator directly. See, look at this. This is our ये 19,400 का पुट है. एक मिनट इसको लोड होने दो. So 19,400 put, yesterday also we discussed about it, and हमने यहाँ पर आपको बताया था कि 50 important है इसके लिए. कल का लो इसका 53 था, आज का लो इसका 57 है. So if you see here, I had told about that also, and let us look at even the open. Best is to stick with the open. Open में क्या है 64.9, so almost 65 ही मान के चलिए. तो let's go with our option calculator.
यहाँ पर आप 65 डालोगे तो 70 के ऊपर ही बाइंग आएगा, उससे पहले बाइंग नहीं आएगा। ठीक है, 70 के ऊपर बाइंग है, 65 पर स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो 70 यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक बार आया था, ये तो आपको नहीं मिला है। 70 के ऊपर यहाँ पर एक्चुअली एक बार आया था, 65 का स्टॉप लॉस था, तो पहला टारगेट 80 था, 80 के आसपास एक बार तो आ गया। तो 80 आ गया तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल भी कर सकते हो या एग्जिट भी कर सकते हो। सुबह सुबह इफ यू सी देयर वाज टू मच ऑफ वोलेटिलिटी, तो उसके बाद अगेन वहां से नीचे ही आया है, इफ यू सी देन यहाँ पर नहीं टिक पाया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से 70 से 80 एक और बार गया है। Now again, it has to stay above 80, then only I think there is some good momentum which is going to come. तो 70 to 80 जा रहा है, उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है, and currently somewhere around 74 है। So relatively बैंक निफ्टी ठीक है, तो बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। Let us look at बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का we will look at right now we are at 45,300 का पुट ले लेते हैं। See, yesterday in the video also I've explained you there is a hanging man pattern in Nifty and there is a doji pattern in Bank Nifty. Both of them are suggesting that at the higher level it is difficult for the bulls to pull around. उसके ऊपर ले जाना इतना आसान नहीं है, तो एक बार थोड़ा सा करेक्शन होगा तो वहां से एक्चुअली बुल्स कैन अगेन ट्राई टू टेक द प्राइसेस हायर एट दिस हायर लेवल। यहाँ पर थोड़ा सा एक्चुअली क्या बोलते हैं उसको, देर इज सम अमाउंट ऑफ सप्लाई विच इज देयर, वो सप्लाई को एक्चुअली एक बार निकलना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट एट द लोअर लेवल अगेन बुल्स कैन ट्राई। वो ट्राई करते हैं नहीं करते हैं वो पता नहीं है। if they want to trap us at the higher level then they may actually keep trapping us at the higher level, वो कर सकते हैं। तो अभी के लिए okay, let us see, this is 90, where is it, this is uh, this is 45,300 put, तो open is at 200, तो 200 डाल देते हैं। ठीक है, 200 के 10 के ऊपर बाई है, 200 का स्टॉप लॉस है, 230 250 ऐसा एक्चुअली आपका जाएगा। ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट इट हैज डन। सुबह तो एक्चुअली नीचे गया था तो वहां पर अपॉर्चुनिटी नहीं था, नीचे आने के बाद 210 के ऊपर ही बाइंग है, तो 210 के ऊपर यहाँ पर आया है एंड नेक्स्ट टारगेट इज 230, तो 230 का हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। तो यहाँ पर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग सकता है और यहाँ पर नीचे फिर से आप देखो 210 को वायलेट नहीं किया है, 210 211 के आसपास आया है, देन अगेन 230 गया है। ठीक है, 230 के ऊपर कौन सा था हमारा, 230 के ऊपर वी हैव 250, लेट्स सी 250 हुआ है, 250 भी हुआ है, आप देखोगे तो दो टारगेट तो हो गया है। तो उसके बाद यहाँ पर तो मेन चीज क्या है ना, जब मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाता है आपको निकलते रहना चाहिए, दैट इज वेयर एक्चुअली आपका हाइकनाशी हेल्प करेगा। हाइकनाशी विल हेल्प यू टू एग्जिट, आपका एग्जिट शायद यहाँ कहीं पर आ गया होगा वहां पर एंड फिर से आवर बाई विल कम एट 210। टू देखिए 200 से नीचे चला गया, 210 के ऊपर एक्चुअली फिर से बाइंग है, 210 के ऊपर फिर से बाइंग 230 तक, 230 के ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो, देन एक्चुअली 250 भी आ गया, then again our buying will be only somewhere around 210
210 का देखते हैं, 210 नहीं आता है तो 230 का हम देख सकते हैं। ठीक है, 210 के आसपास आ रहा है, 213 के आसपास, 213 के आसपास आ गया तो यहाँ पर देखिए 210 के हिसाब से 200 आपका स्टॉप लॉस बनेगा, 200 विल बी द स्टॉप लॉस। देन एक्चुअली यहाँ पर 230 आ गया, 230 के बाद 250 आया है, नहीं आया है, नहीं आया है, तो यहाँ पर आपका शायद स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट में हो जाता था। यहाँ पर देखिए इट हैज नॉट बीन एबल टू कम टू, इट इज स्लाइटली इंक्रीजिंग, 220 के ऊपर गया है, 230, 250 के ऊपर भी चला गया है यहाँ पर। आई व्हाट इट हैज डन, 265, व्हाट इज आवर नेक्स्ट लेवल, next level 270 है, 270 has not happened, so it is actually rotating in this range. So whenever you get somewhere nearby to 210 is a good buy। लेके again 210 आया, again आपका 230 भी आ गया, 250 नहीं आया। So you have to, you can probably mark your positions there, 210, 220, 230, sorry 210, 230, 250, ये levels पर आप mark कर सकते हो। And at the lower level you have to look at the buying, that is what is happening at this point of time। और कुछ खास नहीं हो रहा है, अभी फिर से एक बार ऊपर चला गया है, तो इसीलिए वेट करते हैं। देखिए दिस VIX has come down a little bit, तो 1 o'clock को हम देख सकते हैं। इंडेक्स के हिसाब से इसीलिए मैंने बोला बैंक निफ्टी का आप देखोगे तो बैंक निफ्टी तो 150 के नीचे ही एक्चुअली सेलिंग है, तो इफ यू लुक एट दिस बैंक निफ्टी विल गो डाउन ओनली बिलो दिस। अभी यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फेल होगा। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इट टू स्टे देयर। ऊपर जा रहा है, फेल हो रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फेल हो रहा है, नीचे आ रहा है, दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग। सो रिलेटिवली निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है, एंड तो अगर कोई सेलिंग आएगा तो बैंक निफ्टी में ही आएगा, निफ्टी में इतना खास कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखिए 400 इज एक्चुअली रेजिस्टेंस एरिया ओनली, यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर जाके आपको कंफ्यूज कराएगा, ऊपर एक्चुअली नहीं जा पा रहा है, इट इज अनेबल टू गो देयर। लेट्स सी सम स्टॉक्स, स्टॉक्स देख लेते हैं कि कौन सा स्टॉक है जो अच्छा कर सकता है। तो बेस्ट इज टू एक्चुअली screen it from the point of view of हाई, हाई के ऊपर एक्चुअली हमको स्क्रीन करना पड़ेगा। ओवरऑल मार्केट अभी भी कुछ नहीं है, देखिए ऊपर जाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा, देन इट इज कमिंग डाउन, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। सो व्हाट वी विल डू हियर, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सी अगर कोई बड़ा वॉल्यूम कहाँ पर है। वी हैव इन मदरसन में बंधन बैंक, ये बंधन बैंक में बड़ा वॉल्यूम है एंड हैज ब्रोकन दिस।
ओवरऑल तो सेलिंग का ही दिख रहा है यहाँ पर, बट इस लेवल पर सेलिंग नहीं बनती है। तो 230 ही हमारा नंबर था शायद। तो 230 के ऊपर यहाँ पर 210 बन जाएगा। If if Bandhan Bank goes up, it fails somewhere at 230, then it is a good place to short. यहाँ पर short नहीं बनती है और buy भी नहीं बनती है। यहाँ पर we go on buy, we may get stuck। थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं। देखिए, बाई अगर कर सकते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी तो है, क्योंकि अगर इस if it can stay above this 220, let us do one thing. Let us use our calculator for this. 33, 6 points is the ATR. So the open is at 219. Let's do one thing. $219, 6 points. 218, 225. Where is it? The 225 के ऊपर एक्चुअली बाइंग बात कर रहा है। So we can use the calculator. अगर यहाँ पर बाइंग आएगा तो it is only above this 225. 225 के ऊपर ही बाइंग आएगा। एंड अगर आता है तो यहाँ पर ये कोई टारगेट आ सकता है 225.8, 227.4 ऐसा आ सकता है। अभी तो नो ट्रेड एरिया है, यहाँ पर एक्चुअली सेल नहीं बनती है। तो नीचे एक्चुअली इट हैज गॉन, इट हैज done one target, that's all. नीचे it has done 1 or 2 targets and it has again moved on the upside only. तो यहाँ पर it is best to buy करना है तो 225 के ऊपर, but वो भी actually we are trading against the trend अभी के लिए। But यहाँ पर if it can sustain this, then there is a possibility of up move, because यहाँ पर sellers जो है वो trap हो जाएंगे। So let's see, 225 के ऊपर ही बाइंग आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। And what are the other stocks? Polpal and Motherson देखते हैं। Motherson ने डोजी की तरह बन रहा है। This is too small a stock right now, इसको अवॉइड ही करते हैं। Okay, Colgate Palmolive 5% up. Are we at all-time high? Yes, almost all-time high के आसपास ही है। तो all-time high है तो we have to only look at buy only। तो यहाँ पर क्या है, ये important है। इसके पास actually we can look at buy। यहाँ पर कहीं पर if it comes and टेस्ट करके फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेता है, that will be a good buy। वरना यहाँ पर बाई तो कर सकते हैं बट रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा। इफ वी आर ट्राइंग टू डू देन दिस विल बी अवर स्टॉप लॉस अगर करना है तो, because already it has moved up too much, but the volume अच्छा है, all time high है। तो all time high, where is the all time high? 1823।
if it has not gone there, it can go on test 1823. तो ऑलमोस्ट अभी भी 20-30 पॉइंट्स है. इट कैन गो ऑन टेस्ट दैट. उसके ऊपर देखना पड़ेगा इफ इट कैन सस्टेन देयर और नॉट. तो लेट्स डू वन थिंग. यहाँ पर लेट्स ट्राई टू स्कैन सम स्टॉक्स बेस्ड ऑन हाई प्राइस. तो देखते हैं यहाँ पर आर वी गेटिंग एनी गुड स्टॉक्स. थोड़ा सा बड़ा स्टॉक लेते हैं, छोटा स्टॉक को अवॉइड करते हैं. ये बहुत बड़ा हो गया. अबाउट भी बड़ा हो, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया. We can look at other things. Okay, let us look at Dixon. Okay, this looks good. Gap down है, and then also it is down. 4% already down है. तो यहाँ पर एक important level है 4220 के आसपास. So that is also violated. So 43. What is the price now? 4180. So let us see where are we here. 4004. तो ओके, यहाँ पर important level जो बनेगा, first level is 4300 and the next important level becomes 4000. okay. तो अभी तो हमने क्या किया है, 4300 पर ही हमने वायलेट किया है. तो यहाँ से तो ये 4000 तक भी जा सकता है. It has all the potential to come till 4000 in the coming days. तो यहाँ पर on the कोई भी अपमूव आता है, यहाँ कहीं पर रिजेक्ट होता है, देन इट इज आइडियल. तो यहाँ पर लेट इट मूव एज लॉन्ग. यहाँ पर थोड़ा सा एक्चुअली मूवमेंट आ सकता है ऊपर के साइड पर, एंड इट हैज टू फेल समवेयर हियर. यहाँ कहीं पर मे बी राइट नाउ व्हाट इज द प्राइस, 4182 है. तो मे बी इट कैन ट्राई टू कम टुवर्ड्स 4200. 4200 के आसपास आ सकता है, या इट कैन कम 481. बहुत दूर है. and this was the first 15-minute low. तो possibility है it can come till here. If it comes here and if it fails to hold it and starts coming down, यहाँ पर अच्छा होगा. यहाँ पर actually sell will be risky or it has to break the low. लो ब्रेक करेगा तब हम शॉर्ट कर सकते हैं. यहाँ पर आकर रिजेक्ट होता है, देन हम शॉर्ट कर सकते हैं. वी कैनॉट शॉर्ट एट दिस लेवल. ये थोड़ा सा रिस्की ज्यादा हो जाएगा. let us see what other stocks are there. Okay, let us look at Hero MotoCorp. Okay, Hero is moving up only. It has violated this. देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर we had this double top को वायलेट किया है इसने. तो जब तक इसके ऊपर है, we can stay positive. If it again breaks this and comes down, then it is going to become negative. वरना ये positive है. So let's see what are the important levels as per this. 3093. Okay. 3093. Let's add this 3093. So 3100 important है now.
3100, then it will be 3400. 3100, let us see. पहले इसको डाल देते हैं 3100 पर. 3100 के नीचे यहाँ पर 3100, 2650 है. क्या इससे ऊपर कौन सा है? 2857. ओके, these are the important levels. अभी 3100 के ऊपर सस्टेन करेगा तो और ऊपर जा सकता है. तो 3100 अभी के लिए important रेजिस्टेंस है. 3100 के ऊपर इसको सस्टेन करेगा तभी कुछ कर सकते हैं, वरना यहाँ पर ओके, इफ इट फेल्स हियर टू गो बियॉन्ड 3100, यहाँ से ही ये रिवर्स भी कर सकता है. तो वेट करना पड़ेगा. वी हैव टू सी व्हाट इट विल ट्राई टू डू. इसके ऊपर जाता है तो पॉजिटिव है, इससे नीचे आता है तो नेगेटिव है. नेगेटिव इमीडिएटली नहीं आएगा, ये नेगेटिव आएगा भी तो ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा 3093 के आसपास. So let's see. तो ये 3000, हाँ 3025-26 के आसपास ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है अभी के लिए, और ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है. इसके नीचे आएगा तो नेगेटिव है. एज लॉन्ग इट स्टेज above this it is positive. तो अभी के लिए तो रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है on the buy side, because we don't know whether it can stay above this, क्योंकि यहाँ पर बार बार रिजेक्ट हो रहा है. तो इफ इट कैन ब्रेक दिस देन एक्चुअली ठीक है, यहाँ से फिर से बाइंग आएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा. अगर यहाँ से नीचे आता है देन एक्चुअली शॉर्ट कर सकते हैं ऊपर का साइड में स्टॉप लॉस लगा के. तो दोनों भी एक्चुअली पॉसिबल है. अभी के लिए बेस्ट इज टू अवॉइड. अभी के लिए ये रेंज है. You can see here, this is the range in which it is trading. Above this it can become positive, below this it can be negative. So best is to wait and watch. यहाँ पर ट्रेड नहीं बनती है. Okay, let us look at Indigo. Okay, Indigo. I think Indigo is at all-time high. हाँ, ये तो all-time high के पास ही है. Now, most important is what is the price? 2650. 650 डाल देते हैं. तो that itself is a very important level. 2650 is going to be very important. About 2650 it is positive. It can move towards 2800. Otherwise नीचे का लेवल जो है वो खुल जाएगा, which will be around 2490. Let me mark this. 2650.
This is very important. यहाँ पर actually it is still having some challenge. If it can stay above that, it is positive. इसके ऊपर अगर ये break हो जाता है, then it is positive. If it fails, then actually it can become negative. तो अभी के लिए ये this is again best to wait and watch only. यहाँ पर if you want to take a trade on the opening side से already यहाँ पर देखिए we can do another thing. If you want to take a chance, ये stop loss बन सकता है इसके नीचे. And if you are actually waiting for a dip, यहाँ पर dip आना चाहिए और उसके बाद ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ पर फिर से ले सकते हैं, stop loss छोटा हो जाएगा. वरना देखिए 2650 इसको होल्ड करना इंपॉर्टेंट है. If it fails to hold, then it is going to become negative. As of now, everything looks positive only. यहाँ पर सारा डेटा तो पॉजिटिव ही है. ये स्कॉट्स का देख लेते हैं. ये स्कॉट्स 2248 है. 2248 is the price. तो 2250 के ऊपर ही ऊपर है. So everything is either at a support or a resistance. तो यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है. दिख तो रहा कि नीचे जाने का चांसेस ज्यादा दिख रहा है. कि यहाँ पर भी देखिए ये इवनिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न हो चुका है. ये तो थोड़ा नेगेटिव ही है. तो we are not getting any stock where we have any good risk reward. So it's best to wait. If you want to take a chance, एस्कॉर्ट्स में देखिए ये छोटा स्टॉप लॉस बनेगा, बट ये टेस्ट भी कर सकता है, ब्रेक भी कर सकता है. ये बड़ा स्टॉप लॉस बनेगा. अगर ये ब्रेक हो जाता है, इफ इट स्टेज अबाउट 2250, देन ये ऊपर जा सकता है. यहाँ पर होगा नहीं होगा वो देखना पड़ेगा. एज ऑफ नाउ द डेटा इज स्टिल ऑन द पॉजिटिव साइड. ट्रेंड पॉजिटिव दिख रहा है. ओवरऑल डेटा अभी के लिए ठीक ही दिख रहा है, but it should sustain beyond 2280. If it cannot sustain beyond 2280, ये नेगेटिव है इस स्टॉक के लिए. Let us look at ACC. और यहाँ पर मार्केट कर क्या रहा है. Bulls and bears are definitely fighting quite a lot. धीरे धीरे से if you see the broader market थोड़ा सा डाउन जा रहा है, but it's not at a place where we have to be afraid of. ऐसा कुछ खास अभी नहीं हो रहा है. 33. It may come down. अगर नीचे आता है, then actually it is negative at once declines. As of now, things are still quite positive only. Everything is still looking okay only. ऐसा कुछ. Okay. This is increasing. If you see Bank Nifty, PCR is actually moving towards the
call writer strong हो रहे हैं. They are becoming stronger and stronger. So everything will depend now on the bank nifty only. Bank nifty अगर नीचे जाता है, that will drag nifty also along with it. I think we have seen enough stocks. Every stock is actually having some or the other place it has got stuck. यहाँ पर this is one stock where I can see that things are actually looking quite bad. LIC हाउसिंग फाइनेंस में कल भी हमने इसके बारे में बात किया था. It is looking quite far and यहाँ पर सुबह भी ऊपर एक बार गया है और फिर से रिजेक्ट हुआ है. So this is not good. So if it breaks, if it starts going below yesterday's low, then it has potential to move towards 370. So Indus Tower is looking 2 weeks. Sir. Which one? Indus Tower? Yes, sir. And heavy positions have been built up in this current series. Yes. Stock is very much sideways, negative only. Long time frame is negative. Weekly time frame is little okay. Daily time frame trend is not very clear. So okay, here if you see what is happening, it is in this range. Until it is not going to break this on the upside or break this on the downside, nothing will happen here. It will keep on actually getting into a range. It is difficult to trade this. यहाँ पर भी देखिए, this is now the important levels. Okay, let us look at from the Gann levels. तो यही है 150, 170. तो 170 के नीचे नीचे ही है, but अभी it is in between. So it's very difficult to decide on what has to be done here. But overall looks like it is more on the negative side only at this point of time. जो भी data है थोड़ा सा negative ही है. So it's actually, I mean, when you look at the broader picture on a daily time frame, it's a clear head and shoulder breakdowns. Where is head and shoulder? So I'll send you the picture on WhatsApp, sir. Head and shoulder. Are you talking about that? I can't see any other head and shoulder here. At least in the daily time frame, I can't see. Hourly also, I can't see anything as a head and shoulder. So I don't know where you are seeing the head and shoulder here. See, as of now, it is very much neutral. I feel it is best to avoid trading here. Trading, if it has to be done, it has to be on the negative side only. Here, nothing. Sorry, Mr. Sir, it's a bullish trade. Actually, I mean, we can see it as a rounding bottom, right? You said head and shoulder, so we are saying rounding. No, head and shoulder was for different stocks. That was for Aarti Industries. Rounding bottom, where you are seeing rounding bottom? You are saying about this? Yes, sir. Again, this has to break it. Until we don't break 170, it is still sideways. And this can continue for months together also. See, this sideways pattern can keep on happening and it can keep on continuing for months together. See, from here, if you see,
from January. From January, this range has actually started, and this range is actually continuing almost 6 months is over, and it can take another 6 months also in this range. So until the breakout happens, it is difficult for us to decide on anything. Positionally, swing trade, I don't see anything happening. Intraday also, as of now, it is in a very, very narrow range. If this narrow range breaks, then probably something has to be seen. Otherwise, I don't see any major thing happening here. What was the Have other sent thing the you photos said? over WhatsApp, sir. Which one? For Aarti Industries and for this one, Industar. The industry. The industry is this can be a cup and holder. It cannot be a head and shoulder is not there. But let us see where you are. See somewhere around 40. It is quite negative at this point of time. And where is it? 998. So 50% also it has broken. But here it is trying to hold. This is a big range. See again, see this is in Aarti Industries. This is the range it is actually there. It needs to break it. This is where it has taken support. Earlier also, if you see after this big, huge volume also, it has taken support here. Until it is not going to break, I don't expect any major thing to happen here. It has to break this. Here, it is taking support. That break, if it breaks the support, then it will take. Let us see the levels here. 488, right? 488, 490, and 490. Let's add this. See, the nearest level is 490. Below 490, it is negative. Okay. Below 490, it is negative. As of now, it looks negative only, but it has to stay below that. Below 490, it has to stay. As long as it is staying below 490, it is on the negative side only. Okay, for the index now, it is very much flat. Nothing is happening in the index. So the next time becomes important for us, which is coming somewhere around 1 o'clock. 1 बजे के आसपास का time important हो जाता है. For weeks also the time is coming around 1 o'clock, 1 to 1:15. Then for Bank Nifty it is at 1:15 to 1:30, and for Nifty के लिए नहीं है. So we need to wait and watch. So if you see, Nifty is यहाँ से ही फिर से support लिया है. It is not actually coming down easily. Bank Nifty may be actually थोड़ा सा support लिया है यहीं पर. So ये low has to breach. Until that low is not getting breached, I don't see any major momentum is going to come here. Okay, VIX.
it's already 3% up है, तो लगभग ठीक ही है. So look at this again and again at 400 it is trying to come, and 400 is going to be a major resistance for the 19,400 पर बहुत अच्छा call writing है. So it has failed one times, two times. It is trying to fail again. So let us see कि कहाँ तक actually जाएगा. See if it is getting rejected. See, we have to, as I said, major reversals अगर कुछ भी होता है, generally it happens only after 1:30, 1:32 o'clock, because it will ensure that आप actually frustrated हो जाओ. It will keep moving. It will keep doing the stop loss hunt. वहाँ आज यहाँ पर stop loss hunts ही हो रहे हैं. कुछ भी you can't make out anything with the data. Data बार बार आपको ऐसा दिखाएगा कि एज दो ये एक्चुअली ऊपर चला जाएगा, कुछ नहीं होगा. That is what is happening. So I don't see any major thing happening until unless the violation of the levels happen. Most of the stocks अभी actually ऊपर के level पर है, तो resistance पर है. तो resistance के ऊपर if it has to sustain, it needs much bigger volume of buying. अगर बड़ा वॉल्यूम बाइंग नहीं आता है तो सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा at the resistance level. So resistance level, if it is failing, then it is a challenge. So guys, I think we will have to wait for another 1 hour, then only kuch hoga. So if you have any doubts, let me know. Otherwise, I don't see any. Index is going to be very much flattish. तो ये ब्रेक करेगा तभी एक्चुअली कुछ होगा. It has to break the levels, then only it will do something. And on the upside, until and unless we don't sustain above this high, थोड़ा थोड़ा कितना भी ऊपर जाएगा वहां पर सस्टेन नहीं कर पाएगा. It will fail. It will keep failing, even in bank nifty as well as nifty, because ऊपर का लेवल पर we have been getting that rejection. तो सप्लाई है वहां पर और बार बार रिजेक्शन आ रहा है, which is suggesting that at the higher level यहाँ पर if it has to break that, it needs bigger strength. तो bigger strength के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे जाकर और लोगों को ट्रैप करना पड़ेगा नीचे के साइड पे और फिर से ऊपर लेकर आना पड़ेगा. If that happens, then actually it is possible. But अभी के लिए तो नहीं दिख रहा है. Possibility is unlikely at this point of time. So I think if any major thing will happen, it will happen today after second half, or it may happen tomorrow. कल एक्सपायरी भी है, और अगर आप देखोगे तो फ्राइडे मार्केट के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल होगा 19,000 का. 19,000 is going to act as a very strong support, and 19,200 is something which we may test 19,200 by tomorrow. Possibility है, होगा नहीं होगा देखना पड़ेगा. तो as per the option का जो हम एनालिसिस करते हैं, इसके हिसाब से what I can see is this. We should actually stay above 19,000, and probability is we may come and retest 19,200. And बैंक निफ्टी का जो बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है कि 44,800 is something which can get retested, and
पॉसिबिलिटी है कि वी मे रिमेन बिटवीन 44,500 टू 45,000, इस रेंज में हम बीच में रहेंगे। 45,000 के नीचे हम एक्चुअली 44,700 पहली, और उससे उस वो होल्ड नहीं करेगा तो मे बी 44,500 तक भी आ सकते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, इफ एट ऑल नेगेटिविटी कुछ भी होगा तो बैंक निफ्टी पर ही होगा, एंड एज लॉन्ग एज वी होल्ड 45,000 अभी भी वहां पर स्ट्रेंथ दिखता है। बैंक निफ्टी में 19,300 इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे एक्चुअली 19,200 तक आ सकता है। So that is what the option chain is suggesting us till expiry, that is today tomorrow। कल तक एक्चुअली जो दिख रहा है 19,400 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो वहां से they can push the price on the downside। नीचे जाएगा तो 19,300 is another level where बुल्स का स्ट्रेंथ दिखता है। अगर वो वायलेट करता है तो एक्चुअली नीचे का साइड खुल जाता है। बैंक निफ्टी में 45,000 एक्चुअली इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर एक्चुअली बुल्स डिफेंड करेंगे। अगर वो टूट जाता है तो एक्चुअली ये नेगेटिव होगा। So whatever has happened yesterday, yesterday's lows are going to be very, very important. If we break that, there is a good amount of downside which can happen. Till we hold yesterday's low, I think market ज्यादातर sideways ही रहेगा। बहुत ज्यादा नीचे, बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिखती है। दस्ती की ये, this is a hanging man, sorry, where is it? This is a doji pattern anyway for the bank nifty। तो आज का एक्चुअली जो पैटर्न है, या आज या कल में यहाँ पर एक नेगेटिव पैटर्न बन जाता है, यहाँ पर फिर से इवनिंग स्टार पैटर्न बन जाएगा। तो इवनिंग स्टार पैटर्न जनरली बहुत स्ट्रांग होता है, जल्दी नहीं एक्चुअली टूटता है। और अभी आप देखोगे ये ऑलमोस्ट डबल टॉप की तरह दिख रहा है, बट उसके लिए एक नेगेटिव कंफर्मेशन जरूरी है, एंड वी नीड टू गो एंड क्लोज बिलो दिस लो ऑफ यस्टरडे। उसके बाद ही एक्चुअली कुछ correction दिख सकता है। And we need to see now what is happening is, at this level, if bulls will start booking profit, this is the best place for bears to start attacking। bears अगर अटैक करते हैं तो वो एक्चुअली मार्केट को यहाँ से नीचे ले जाने के लिए बहुत सही जगह है। दिस द राइट प्लेस फॉर देम टू डू दैट। अगर वो करते हैं, नहीं करेंगे, we have to see the activity of the bears now। bears have to push the price down। अगर bears नहीं करेंगे तो bulls फिर से एडवांटेज ले सकते हैं। तो we need to see if bears are going to come with a big strength के साथ आते हैं। अगर वो स्ट्रेंथ के साथ नहीं आएंगे तो अभी भी डोमिनेशन बुल्स का ही है। So anything you want to discuss, you can let me know. Otherwise, I think we will wind up the session, because until the next 1 hour, I don't see any major thing happening here। It can remain still quite sideways, and if at all कुछ होगा तो 1 बजे, 1:30 या maximum 2 o'clock तक। Most of the time क्या होता है, 1:45 2 o'clock के आसपास से ही actually major movement आना start होता है, especially when it is trying to do some kind of a reversal। क्योंकि यहाँ पर बाइंग के लिए इट हैज टू सस्टेन अबव द हाइस, तो इतना एक्चुअली खास यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है एज ऑफ नाउ। एंड बेसिकली दिस इज अनदर मेजर प्रॉब्लम, प्लस दिस आर एक्चुअली हैवी वेट्स, और इसका वेटेज जो है अभी रिलायंस का वेटेज से भी बड़ा है। ऑलमोस्ट 14% का वेटेज अभी है HDFC बैंक से।
तो यहाँ पर जो भी एक्चुअली है, यहाँ पर कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो टॉप गेनर है which is going to have any big weightage. बड़ा वेटेज नहीं दिख रहा है यहाँ पर किसी का भी. Let's see what is our Infosys फ्लैट है, रिलायंस फ्लैट है. तो मेजर एक्चुअली जो हैवी वेट्स है वो सब फ्लैट है. तो मेजरली यहाँ पर जो एचडीएफसी बैंक का वीकनेस है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कोई बड़ा हैवी वेट नहीं है. तो वॉट एवर इज हैपनिंग इज विथ अदर स्टॉक्स. तो जो भी अदर स्टॉक्स है वो कहाँ तक एक्चुअली कितने टाइम तक एक्चुअली होल्ड कर पाएंगे देखना पड़ेगा. So I have a question related to the advanced decline ratio, the capital tools market snapshot. Now, what is the question here? Sir, always I have seen, from the morning till the afternoon, the ratio will keep on reducing most of the time. See, even if we find the index moving up, and even if the call options will give good profits, even then, the AD ratio will be coming down only gradually with time. See, initially, if the advanced decline is too big, then that may come down because profit booking may be happening. Mm-hmm. See, the major thing what happens is if the advanced decline is too much, like see anything above 2, 3 and all, if it is there, then it is very difficult to sustain. That means for every one stock which is up, more than 3 stocks, 4 stocks are up. Which if it has to happen, then market also has to rally. Market has to go up somewhere 200. Nifty should have gone up. If all the stocks are such big stock, so many stocks are up, then maybe 200, 300 points upside should have happened. If it is not happening, then if it is not happening and if it is not sustaining, then probably slowly the corrections may happen then. See, for us, what is important is advanced declines. As long as it is even above 1, it is still okay. We don't see any major correction. So average range, whatever is there, जो 120, 150 पॉइंट्स है वो आ सकता है. उससे ज्यादा का एक्चुअली उम्मीद नहीं है on the downside. If at all actually if that goes below that, then probability is there that we can expect some higher sell-off which is there in the market. On the other hand, if advanced declines is somewhere around 3, 4 and all in the morning, and slowly it is reducing, in that case, maybe more than 200 points of selling also can happen. I'm talking purely from the point of view of Nifty. Getting the point? So advanced declines and all, see, what is very important is the price. What is the index price? That is the most important thing. If you are working on the options, what is the option price? That is the most important thing. Rest of the things will not matter at all. Because see, all those things will give you an additional confirmation on what is happening. But just looking at that, you cannot conclude anything. See, what happens is when the advanced decline is quite healthy, the possibility that it will come, the prices will come down is going to reduce. That doesn't mean that prices cannot reduce. It is still possible. See, what happens is advanced declines can be healthy and there could be few stocks which are having very high weightage, and these stocks may actually work on the opposite direction. Getting it? See, currently there are a lot of stocks which are up, and that is why market is not coming down, and that heavy weight is actually down. Now this heavy weight is down, other stocks are also actually going down. If suppose
all the other stocks are actually going down, then you may see some bigger selling which is going to happen. So currently this is where actually index is getting managed. Getting it? Yes, sir. So is your question clear? Is the question answered? Is there still any Sir. confusion? No, sir. Thank you, sir. Anybody else has any other question? See, as of now, market is below the sell below price in Nifty. It is still not below the sell below price in Bank Nifty. So, though Bank Nifty is relatively weaker today, it is still not actually doing that because 45,100 is our important Gann number. And it is still above that 45,100. That 45,100, once it breaks, you will see a sharp correction of 200, 300 points very fast. Similarly, 19,350 is another important Gann number for us. And as long it is staying, see, if you see exactly there only it has taken the support. Now, once it breaks that, you will see some sharp correction of maybe 100 points. So till that doesn't happen, it may keep actually rotating, confusing, all those things are happening. See, we are understand these are important things from the intraday. Intraday, most important price is open. As long we are below open, it is negative. Second important price will become yesterday's high or low. See, if we are actually above yesterday's high, then the strength is there. If we are below yesterday's high, then there is already some amount of weakness which is there. That doesn't mean that it has to be weak, but the most important thing is yesterday's high is going to act as a resistance. So open price is very, very important, and our pivot levels. So as per the Gann pivot level, I had actually mentioned to you in the morning also. Important level is 19,000. Pivot comes somewhere around, I think, 19,365 and 45,325. I think this is where the pivots are coming. So if you see here, there only it is struggling. It is not able to do anything. It is Bank Nifty is from the morning below this. Nifty is not able to go below this. It is still struggling. So this is a pivot level, and the important Gann numbers right now is 19,350 and 45,100. That is where actually both of them are trying to take the support. If you see, if it starts going below that, then everything will probably go down, but that is not happening. You can see here both the places it is taking, and that's why I said Nifty is still not actually, if you look from Nifty and Bank Nifty, Nifty is somehow holding this. But 19,400, there is a lot of call writing which is happening. So sooner or later, they are going to push this. Now, if our bulls are strong enough, then they can actually take it up or even now. But will they do that or not? We have to see. As per the levels, as long as we stay below this, see, we are still staying below the Gann below number only, sell below number only. So we are still below that. But anyway, if at all the strength is there, it can try to show us. That will only reflect maybe after 2 to 15 or so. So let us see what it will do. Overall, right now, market, according to what I see, is going to be either more on the flat side or probably on the negative side. That is what actually we are seeing at this point of time.
but nothing much is happening here. So from yesterday and today also, highest volume, highest opening price, everything is there at 19,400. And if you see here, put traders have actually somehow been trying their best to hold on to this. And here also the highest volume is now shifted to 19,400. So 19,400 is the make or break. Above that, it becomes positive. Below that, it is negative. As of now, it has been on the negative side only. And if you see here, our AMA line is very much on the negative side, sorry, on the sideways only. RSI has come down. RSI has given us negative divergence and it has done CIP. All those things have happened here. So let's see what actually market wants to do right now. It has to start trading below this, then only it is going to go negative. Here also, if you see, it is unable to go up again and again, it is getting rejected. But till we don't break this, it is going to be sideways only. It has to break that, and VIX has somehow cooled off a little bit. So we have to wait. There is no choice for us. When the market is sideways, what you will do? Whatever you will do, you will unnecessarily lose money. Instead of that, let's best is wait. And if I have to look at the option directly, see, the biggest problem with option is when price is not moving, option price will also not move, or rather it will go down. So that is why it is best that you wait, then actually you can take the trade. Okay, look at this. The price is again below. See, for us, the buy was above 70 here. 4.9 is there, no? So now it is somehow still very, very flat. Nothing much is actually happening in case of this. And let's look at Bank Nifty. Bank Nifty for us, we had the above price buy above was 210. So we are almost nearby there. So let's see. See, again and again, it is trying to go up, failing. So it has failed how many times? 1 time, 2 time, 3 time, 4th time. So generally, 4th or 5th attempt, it can actually break. On the negative side, let us see how many times it has failed to go down. 1, 2, maybe here 3. So let's see. I think here actually it is very, very sideways. So I cannot make out how many times. But now, how many times it has moved up, it has again also tried on the moving on the downside also. Now, if it breaks this, possibility is very high that it is going to break. See, generally 4th time or 5th time, it generally breaks. So let us look at from the option side, how many times it has actually tried. This is which one? This is 19,400, the 4th. So if you see, it has to break this on the higher side. So it has tried here once, twice, maybe thrice here, 4th time. Now it is the 5th time which is coming. So the 5th time is where it has the possibility to break. So let's see. If it breaks, then it is good. Now on the Bank Nifty, let us see how many times it has done.
So 1 time, 2 time, 3 time, 4 time. Again, here also, 5th time is not done. So 5th time, if it breaks this, see, preferably if it breaks the high, that is much better. Best is here it has to break the low and there it has to break the high. Because there we are doing option buying. Here actually we are talking about the prices moving on the downside. So let's see. See, from our index point of view, we need to sustain below 19,370. What was the price? Okay, let's look at Bank Nifty. Bank Nifty has to sustain beyond this. So preferably Bank Nifty has to break the low. And for Nifty, Nifty has to sustain below this 19,371. So once it is able to sustain below that, that is where it will give you a bigger sell side. Okay, guys, I think we will wind up the session anyway, because as I said, it is still sideways. Once it breaks this, then only you will see the momentum. So I think Bank Nifty will lead the way, and it has to break this low. Once it breaks the low, then only we will see that selling side which is going to come up. So we are almost at 12:30, which means half time is over. So generally half time is over. From here, things can actually start giving some movement. See, right now market has been very much sideways. From the morning, Nifty is very much sideways. Bank Nifty a little bit better off. But if you see in the first 15 minutes, whatever it did, after that, it has been very much sideways. Whatever has happened only in that place. So now it needs to either break the low or the high. If it breaks the high, then it has potential to go higher. If it breaks the low, it has potential to go down. Overall possibility is very high on the downside, what we can see. But till it is not going to break, momentum will not come. Until the momentum will not come, you may not actually really get any major moves which is going to happen. And especially in an option, your stop loss can get hunted, especially when you are actually trading in a very, very narrow range, because they are going to hunt your stop loss and then only the prices will move up. So whatever stop loss you keep, there is all the possibility it will hit that. So it's better that you trade only once it actually moves out of the range, or it breaks this low, or on the option it has to break the high. Okay. So if there is no other question, I think we will wind up this. We will catch up again in the later stage. Okay.